of Smart India Hackathon 2024. Now let's be real. Most of us dream of winning something like SIH, but very few actually get there. Tonight, we get behind the scenes, look at what it really takes. This isn't just another talk, this is your chance to learn directly from someone who's been in your shoes. Someone who has cracked SIH and knows the difference between the good idea and the winning solution. Whether you are a first time participant or a part of a team already planning for 2025 SIH, you are in the right place. At CodeNeuraX, we are all about growing together as a technical community. With 2,500 plus members, we have built a space where learning, sharing, and collaborating fuels growth. An event like this are designed to make sure that you don't just learn from any books or tutorials, you learn from real experiences. So we all know that, right? That when the clock hits 3 a.m. during the hackathon, every line of code feels like Shakespeare's poetry until it doesn't compile. So I'm sure that some of you can relate, right? So before dive in, I want to ask you a quick show of hands or type in the chat that how many of you have already SIH team and how many of you are still looking for the right teammates. Let me see in the comment section. Also, don't just sit back and listen. This is your chance to ask Arkja Gaur your burning question. Drop them in the chat, and I'll make sure to. Yeah, cool. So, before we start, now let's start this session. Welcome the star of today's session, Arkja Gaur, the winner of SIH 2024. Yeah, she and her team not only stood among the thousands of participants, but also set an example of how preparation, teamwork, and the right mindset can lead you to success. Arkja, we are so excited to have you here with us today. Yeah. So, can you introduce yourself and like your journey lead to your success? And yeah, now this I cannot say that right now, but in online session, the stage is all yours. Thank you so much, Prachi, and thank you so much, CodeNeuraX, for having me here. And I'm very excited to share my experience with you all. So, good evening, everyone. I am Arkja Gaur, SIH 2024 winner. It's just been a year since I win this hackathon. And today we'll talk about one thing, which is how to win Hackathon 2025. So, today's session is not going to be boring. Trust me, we are going to keep it interactive. You people can ask questions. I'm going to ask questions very importantly, and you all can ask your doubts. And at the end of the session, I'll make sure that you'll have a clear picture of what it takes to reach the winning stage. Okay. So I want a quick raise of hands of how many of you have already tried hackathon before, or you can also write in the comment section. Good enough. Impressive. According to me, first timers are dangerous. उनकी energy ही अलग होती है. Okay, so let's start. Let's not make you all wait. तो सबसे पहला step है choosing the right problem statement. It is very important to win any hackathon, whether it's Smart India Hackathon or whether it's any other hackathon. You should pick a right problem statement. Don't just pick something cool because it sounds cool. Pick something that can change the world out there. This is very important. SIA judges love when your solution is useful to society. Very important. And this is what we are working for, right? What Smart India Hackathon is? Anyone who knows what Smart India Hackathon is? I'll tell. So Smart India Hackathon is basically organized by Ministry of Education to foster innovations and new mindset. And in today's tech time, we all can see that entrepreneurships are quite at a peak, right? Everyone is starting their own businesses.
And we have a very good example of Zomato and Swiggy. These were initially startups and eventually they became MNCs, right? So this is the first thing, useful to society. Second is scalable enough to help big companies. Now, why I'm saying this, you'll get to know it afterwards. अब टीम की बात करें, टीम फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट एज वेल, बट आई हैव सीन पीपल जो कि है ना एक महीना सिर्फ टीम सिलेक्शन में लगा देते हैं. दे जस्ट फॉरगेट कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी चूज करना है. एट द एंड दे मेस अप. ओके, तो आई थिंक team selection is not about proficiency at all. Even if your teammates know just 30% of their field, but they are confident enough, so that's good. You are good to go. Okay, what matters is a mix of talents. You should have storytellers. Okay, you should have coders. You should have people who know machine learning, Gen AI. It's not compulsory कि उन्हें तो पूरी सब कुछ ही आना चाहिए machine learning. It's about how well you sell your idea and how well you sell yourself. Okay, and as a fresher, nobody expects you to build a $1 billion product. You all are might be in first year, second year, max third year. Okay, and so I think it's not about expecting a $1 billion product, but what judges do expect is a unique idea. Very important. A unique idea, then a clear USP. Now, what is USP? USP is something which will make you win. USP is unique selling point. Okay, and third is if you imagine 100% of what you are creating, you should at least be able to show 50% of it. Okay, not 100%, not 90%, but 50%, and that is enough to win hearts. Okay, now speaking of the internal rounds, see, internal rounds are relatively easy. We all know that these internal rounds are conducted in college itself. Okay, so here in college, in internal hackathon, you require good communication skills, and you should know how to keep your idea in front of those teachers and faculties, whoever they are. It is easy. Twist, jo I think it's a mystery. It's still a mystery. Ki no one actually knows how SIH finally selects the team, right? So, according to my analysis and my friends who earlier won the SIH, we came to a conclusion that जब तुम्हारे इंटरनल राउंड हो जाते हैं लाइक कॉलेज वाले, एंड देन यू आर गुड टू गो टू अपलोड योर पीपीटी SIH के पोर्टल पे एंड योर कॉलेज नेम एंड व्हाटएवर, राइट, एंड योर आइडिया. There you upload a PPT of 6 slides with a prototype. Those two things are the most important things. Remember this. Now you'll say कि वो 6 slides वाली PPT क्या ही describe करेगी, but it is very important. I know you cannot put your brain on those slides, but at least you can put half of your brain on it, right? कि अगर तुमने प्रोटोटाइप बनाया, यू आर गोना गेट इनफ ऑफ टाइम कि एटलीस्ट तुम प्रोटोटाइप तो बना ही लो. फुल वर्किंग नहीं, बट एटलीस्ट कुछ तो बना ही लोगे ना. तो वो जो प्रोटोटाइप रहता है, उसका जो तुम्हारा UI UX रहता है, वो लगा दो पीपीटी में. ओके, अपनी स्टैटिस्टिक्स लगा लो. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हाउ इज इट गोना बी फीजिबल इन फ्यूचर. इकोनॉमिकली फीजिबल कैसे रहेगा, वो कैसे हेल्प करेगा. तुम्हें सिर्फ अगले 2 साल की नहीं सोचनी है, तुम्हें अगले 10 साल की सोचनी है कि हाउ कैन आई चेंज पीपल एंड वर्ल्ड आउट देयर. एंड आई वांट माय आइडिया कि वो परसिस्टेंट रहे, कि ऐसा नहीं हो कि 1-2 साल चला एंड देन एंड फ्लॉप हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड थिंक लंबे समय तक के लिए सोचना चाहिए. तो तुम्हें उसमें डालना पड़ेगा हाउ इज इट इकोनॉमिकली फीजिबल, हाउ इज इट प्रैक्टिकली फीजिबल, एंड हाउ मच फंडिंग यू रिक्वायर फॉर इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू आर नॉट डूइंग कोई सोशल वर्क. You are working for yourself and you are working for people out there, and you are also working for big firms out there. So you need to be clear enough कि तुम्हारी इकोनॉमिकली फीजिबल कैसे है, फ्यूचर में कितना टर्नओवर हो सकता है उसका, फ्यूचर में और कहाँ यूज हो सकती है. लेट्स से इफ अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है,
तो तुम्हें ये बताना है कि अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम आ रहा है तो हाउ कैन इट बी यूजफुल इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हाउ कैन इट बी यूजफुल इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट? हाउ कैन इट बी यूजफुल इन DRDO, इसरो? तो वो सिर्फ एक तरीके से नहीं, उसे 10 तरीके से यूज कर सकते हैं हम। तो तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिकलिटी लाना पड़ेगा, ओके? एंड योर PPT मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर एंड अट्रैक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना कि आई हैव सीन पीपल, वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अरे PPT तो है, ऐसे ही डाल देते हैं, 6 पन्ने की क्या ही डालेंगे इसमें, तो वो बस थ्योरी थ्योरी डाल देते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स, विच इज वेरी बोरिंग। कोई तुम्हारी PPT खोलेगा एंड देखेगा, उसमें कुछ है ही नहीं, तुम्हारी कोई उसमें वर्किंग प्रोटोटाइप भी नहीं है, कोड ही नहीं है, तुमने सिर्फ थ्योरी लिख दिया। अब तुम खुद सोचो, इस बार आई थिंक 70 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई हैं, राइट? और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से 5 टीम सिलेक्ट होती है ऑल ओवर इंडिया, विच इज गोना बी अराउंड 350 टीम्स ऑल ओवर इंडिया। तो उन 350 टीम्स में से तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी PPT के करके रीड करेंगे? उनके पास इतना टाइम ही नहीं है भाई। वो तुम्हारा प्रोटोटाइप देखेंगे, एंड इट इज वेरी मच रीडेबल कि भाई ये तुमने गूगल से निकाला है कि तुमने खुद से बनाया है। तो ये भी मत करना प्लीज। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ChatGPT से बोलूंगा या बोलूंगी कि मुझे ऐसा ऐसा UI UX बना के दे दो टू अपलोड इट ऑन माय PPT, नो, यू नीड टू वर्क हार्ड एट दिस पॉइंट। तुम्हें अपना प्रोटोटाइप तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा और वहां पे शोकेस करना ही पड़ेगा। जब तुम्हें अपना स्लाइड पे ही बेचना नहीं आएगा अपना प्रोडक्ट, तो तुम फेस टू फेस कैसे बेचोगे? नियरली इम्पॉसिबल, राइट? तो टू स्टैंड आउट यू नीड टू हैव योर प्रोटोटाइप एंड good combo of your PPT, right? Okay. Also, I have a suggestion for you all कि जो last slide रहती है, they ask for the links and all, right? कि कहाँ से तुमने कौन से sources से लिया है। तो you can do one thing कि जो तुमने अपना प्रोटोटाइप बनाया है उसकी तुम एक वीडियो बनाओ, ओके? अपने सारे टीम मेंबर्स को बिठाओ और सारे टीम मेंबर्स को बोलो कि हर एक इंसान एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेगा, एक इकोनॉमिकली फिजिबल हाउ इज इट गोना वर्क, और फिर वो 1 से 2 मिनट की वीडियो बना के उसकी लिंक डाल दो, ओके? तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इट्स लाइक अ चेरी ऑन केक वाली चीज। ओके, नाउ स्पीकिंग ऑफ माय एक्सपीरियंस, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, एंड ट्रस्ट मी ये वाले पार्ट से यू ऑल कैन टेक अ लॉट, ओके? सो माय PS was AI surveillance system for missing person in Sehast Mela. Now, why did we chose this problem statement? Anyone guesses? Anyone please raise your hand. Okay, open your mic and tell me. Rufeet or Jeet? Jeet, come on, tell me. I don't want you people to sleep in this session. I want Rufeet. Because of the Mahakumbh, you take those statement, I guess. It was on the, we can say, on the trending topic at that time. Yes, nice. Right, so he is somewhat right कि Sehast Mela is around the corner, and that time Kumbh Mela was around the corner. So we thought that it is gonna be a good opportunity for all of us. So we took this, and you all must have heard that saying कि कुंभ में बिछड़े दो मिले, you know, something like that. So that was our chance to solve this real phrase कि अब हम नहीं चाहते कि ये phrase और चले, कुंभ के मेले में बिछड़े दो भाई, right? तो now you all will think कि even a normal CCTV camera can do it. True, not bad, fine. But the thing is, we didn't just stick on our PS. What our PS was AI surveillance for missing person in Sehast Mela. That's it. That was our PS. But हमने सिर्फ मिसिंग पर्सन पे काम नहीं किया, हम और फर्दर गए। फिर हमने एक मॉडल बनाया क्राउड डिटेक्शन का। मेले में कितनी भागदौड़ से कितने लोग मर जाते हैं, राइट? तो हमने एक क्राउड डिटेक्शन बनाया which is gonna manage the density and identify the danger zone. Then second was the missing person.
Now, with this missing person, we got an idea. What if we go for object detection, missing object detection, or missing object tracking? So we made one more model of object detection. Then in this, we added mail and SMS part. This is interesting thing. So what happens if there's a kin of mine who gets lost in a mela or in a fair? I'll have that website or that Android. I'll upload the picture and the basic details like his age and the name of that person, and I'll upload it. And the security department over there will will take that photo and the details and will upload in that model. और फिर जैसे ही वो भीड़ में जहां पे भी वो बच्चा मिलेगा, वो डिटेल्स SMS भी करेगा एंड मेल भी करेगा टू बोथ, to the security and to the concerned parents or the kin of that person. तो अब उस मेल में it's gonna attach the coordinates of that child कि वो कितने बजे कहाँ पर spot हुआ and the image of that kid. Okay, तो it's gonna be easy for both parents and for the security कि ज़्यादा झंझट ना हो. ठीक है, this is very interesting part. And then the fourth thing which I personally think was a cherry on cake, and I personally think which made us win, was IoT integration. So our problem statement was totally software edition, but we integrated it with IoT, which is hardware, which played a very vital role behind our success of winning this hackathon. So what we did is, what if in case कि वहाँ पे मेल या SMS या नेटवर्क नहीं आ रहा है, या नेटवर्क इशू है तो मेल नहीं पहुंच पा रहा है, SMS नहीं पहुंच पा रहा है, तो इन दैट केस हम लोगों ने IoT इंटीग्रेट कर दिया. वी यूज्ड Arduino, we all know Arduino, and we used basic those lights and buzzer कि अगर कोई मैसेज नहीं जा पा रहा है तो वो लाइट जला देगा या वो बजर बजा देगा, so that security will get to know. Apart from that, when we made that crowd detection, we also used there's an IoT which detects the density of a place. ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक अपन वो क्या करता है, अपन है ना एक डेंसिटी सेट कर देते हैं कि अगर किसी भी जगह में 10 लोगों से ज्यादा हैं तो यू हैव टू अलर्ट द सिक्योरिटीज कि दिस इज नॉट गुड, यहाँ पे फिर भीड़ भक्कड़ हो जाएगी, देन पीपल आर गोना डाई. तो हमने वो भी एक यूज किया था. तो आई थिंक दिस IoT इंटीग्रेशन वाज द चेरी ऑन केक, एंड दैट्स वेयर वी स्टूड आउट. We didn't just solve what was written. Very important, note this point. We didn't just solve what was written. We went beyond, and judges loved it. Okay. Now tell me, if you were solving this PS, what extra features would you add? Come on, raise your hands. Anyone who would like to give me suggestion कि you can add this or add that? It's gonna make your PS more better. Anyone? Come on. No one. Are you guys getting bored or what? I'll repeat my question. Ki, if you were to solve this PS, which is missing person detection using AI surveillance system, what extra feature apart from what we did, what feature would you add in it? Anyone? Anyone from the guys? Please answer this question. It's like more suggestions. Yeah. Zeal, please. I think that you can also add like a live tracker to that person who is like in their family or what. They can track that person or what, like that. You can add like that. Live tracker how? You can just like
if in a family or in a group, one person is like lost, and then if the number is added of that person, we can track that person where is it in that whole density or an area like that. Okay, good suggestion. I liked it. Very nice. Okay, good initiative, Zeel. Anyone else? Yavari is saying like GPS tracker. Okay, Jeet. As you say, you used cameras for the drive tracking. You can add speakers too. At the area from where the person is detected, you can make announcements that the person is lost. Make sure he is there, a safe place. It could be added as an add-on. Yeah, totally. It is very doable. I'm gonna write these points, so in future I'll add it in my model. Okay, anyone else? Last person I'll ask. Anyone else who would like to give me their suggestion? No one? Okay. So there's one more suggestion to you all कि when you form your team, don't just go for कि एक टीम में 6 लोग हैं और इसमें से 2 लोग बैक एंड के हो गए, 2 लोग फ्रंट एंड के हो गए. No. Make your team bit diverse. Okay? एक मशीन लर्निंग का रख लो, एक डेटाबेस का रख लो, एक फ्रंट एंड का रख लो, एक बैक एंड का रख लो, और एक जो गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका रख लो. These things are enough. Okay? और obviously कोई तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम एकदम ऐसा बस एक ऐसा प्रोटोटाइप बना दो और एक ऐसा मॉडल बना दो और वो भी मार्केट में चला जाए and you'll get millions of it. No. What these people are seeing is वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं your idea, your brain. They are asking for your brain. They are not asking ki how capable are you to make money out of it. Right now at this very initial stage they are expecting you ki how are you gonna solve this problem, this particular problem, and instead of what is asked, what all add-ons you can do or you can apply. Okay, so they are asking your creative mind as well as problem solving mind. Okay, both of them are equally important because you are not if you are not practically feasible with your problem statement, then there is an issue. वहाँ पे बाद में हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो क्योंकि you know 5 राउंड्स में बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस करती हैं टीम्स. तो I think you need to be practical and you need to be creative. Okay. Now, speaking of the winning formula, like I said, key problem statement very important, prototype very important. So these should be the mix, and hard work and clear and impactful working of your prototype is important, and it should be attractive. It should not be fancy and broken. It should be attractive and practical. Okay. Then team diversity, I said, you all should be confident. और ऐसा नहीं है कि अगर 6 लोग हैं और एक ही बंदा बोले जा रहा है. No, never. हर 6 बंदे का contribution होना is very very compulsory. Okay, I'll tell you. वहाँ पे जो 5 राउंड होते हैं वहाँ पे ना हर टीम को एक मेंटर अलॉट कर देते हैं. अब वो मेंटर आते हैं और आपका वर्क देखते हैं and if they like it, then you are good to go, but they are gonna give you some suggestions in each and every round. You need to work upon those suggestions क्योंकि वो एक शीट रहती है उसमें वो लिखते हैं कि हमने ये सजेस्ट किया है, ये 3 points करें, let's see in next 2 hours whether they'll be able to apply it or not. Now your challenge is not to completely apply it. Okay, अगर उन्होंने बोला है कि भाई मैंने मेल का डाला है तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि SMS भी डालो. अब SMS अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं टेलविंड सीखूंगी पूरी और ट्विलो सीखूंगी और पूरा वो कर दूंगी 2 घंटे में अप्लाई कर दूंगी. नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी इधर. तो एटलीस्ट यू शुड लर्न. मतलब अगर तुम्हें 2 घंटे दिए तो आधे घंटे ट्राई टू अप्लाई दोज things on your project. क्योंकि क्या होता है कि I personally think कि computer science and especially machine learning is not something which you can learn from YouTube.
or from theories or books. You need to apply those first. जब तक तुम उसे अप्लाई नहीं करोगे, जब तक तुम उसे खुद से डिप्लॉय नहीं करोगे, तब तक chances are very less. Okay. Then speaking of unique selling point, very important. Unique selling point, अब मेरे में यूनिक सेलिंग क्या था, हमने उसमें 3 मॉडल्स ऐड ऑन कर दिए, हमने उसमें हार्डवेयर ऐड ऑन कर दिया, तो हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू तक नहीं अटके रहे, हमने उसकी 10 चीजें सोची. अब आप खुद सोचो, जो हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो एमपी पुलिस का था, बट दिस कैन बी अप्लाइड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इससे डीआरडीओ भी ले सकता है, इससे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ले सकती है. ओके, एमपी पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस, जितनी भी स्टेट पुलिस है, सब ले सकती है ना. तो हम ये भी बता सकते हैं कि हाउ इट इज फीजिबल. यू नीड टू लर्न हाउ टू सेल योर सेल्फ. अगेन आई एम सेइंग कि देखो, तुम बना लोगे 100% नहीं, 50% तुम बना ही लोगे. But very important thing is your presentation, how you are presenting yourself and your idea to those people. And also assurance is very, very important. How are you assuring those people कि हम future में ये कर सकते हैं? अगर तुम्हारा एक आइडिया है और उसमें तुमने 5 चीजें इम्प्लीमेंट करी है, 5 चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करी है, तो तुम्हें उन्हें बताना है. ओके, and those people are very greedy. They want more and more and more and more, and you should be ready with more and more. ठीक है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तुम उस पर रिसर्च करो जितना हो सके. जस्ट डिग डीप और उसमें से इतना निकाल लो कि एटलीस्ट यू शुड बी रेडी विथ 20 न्यू पॉइंट्स एंड 20 न्यू स्टार्टअप आइडियाज जो तुम बना सकते हो इससे. ठीक है, और अगर तुमने सिर्फ 5 इम्प्लीमेंट करी है तो फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें उन्हें तुम 2 बताओ. ठीक है, और फिर जो तुम्हें वो बाकी 2 सजेशंस देंगे, आई एम 100% श्योर वो उन्हीं पॉइंट्स में होंगे जो 20 पॉइंट्स तुमने रिसर्च करके रखे होंगे. ओके, एंड प्राची, हेलो प्राची. Yeah. We can Yeah, take few doubts at this point, then after I'll continue mine. फिर अपन और doubts ले लेंगे. Okay. Okay, so now I'm gonna ask you further some questions which already जो बहुत लोग हैं उनके mind में है. They are too curious to ask you this. That right now it was so inspiring whatever you said about your whole journey, that why you started this idea working upon this problem statement. It was too nice. So looking back, what was the most challenging part that you faced during this whole hackathon process? Okay, so I think the most challenging part was जब वो mentors आके आपको suggestions देते हैं ना, and then they ask you कि ये नया software ही बोल देते हैं कि नया software सीखो और ये apply करो. That is very, आप जगे हुए और 2 घंटे मिल रहे हैं आपको, and then you have to apply it. It's very messed up, but you, after all, you need to do it. So what happened कि in my case they asked us कि तुम AWS पे data store करो. They are gonna ask you for data set कि how are you gonna store those data set. इतनी सारी pictures आएंगी, फिर जो मॉडल रहेगा वो उसे augment करेगा, तो उसकी 100 pictures बनेगी, सिर्फ एक person की 100 pictures. Then how will you store those data? Where will you store those data? Because ultimately it's a government, it's gonna be a government website, तो data तो store रहना जरूरी है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम data delete कर दें. So at that point we learned how to use AWS S3, and then we applied it and we just did it. And also, yeah, one more point, what we did was कि हम लोग HDI कैमरा लेके गए थे. HDI कैमरा वो जो मॉल में लगे रहते हैं, जो घर में लगे रहते हैं, तो हमने क्या किया, 3 लैपटॉप थे. एंड मेक श्योर कि जो आपको मॉडल है वो एक ही लैपटॉप पे चल रहा है. ऐसा ना हो कि आपने 3 मॉडल बनाया, तीनों अलग अलग लैपटॉप्स पे चल रहे हैं. दिस शुड नॉट बी देयर. एक ही लैपटॉप पे वर्किंग दिखाओ, एक लैपटॉप पे आप अपनी प्रेजेंटेशन खोल के रखो, और एक लैपटॉप पे जो हमने किया था, हमने अपने HDI कैमरा को लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया था, एंड वी वर शोइंग देम द लाइव थिंग. ठीक है, कि ये आप सामने हो तो उन्हें दिख रहा है. एंड देन वी ऑल्सो ट्राइड कि वो जो लाइव डेटा हमारे पास आ रहा था उससे हम अपने मॉडल को कनेक्ट करके डेटा फेच करके
हम मिसिंग पर्सन का दिखा सकें. और अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सीन पीपल की अभी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहे हैं 90% ऑफ देम आर बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच रिक्वायर्स डेटा सेट. अब लोग क्या करते हैं, ये मशीन लर्निंग में है ना, कैगल और रोबोफ्लो का डेटा सेट लेते हैं और उससे अपना मॉडल ट्रेन करते हैं, दैट्स इट, एंड देन they think that they are good to go. That should not be your case, because तुम्हें रियल वर्ल्ड में काम करना है, तुम्हें फॉल्स वर्ल्ड में, इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं काम करना है. तो तुम्हें रियल वर्ल्ड का डेटा सेट रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग काम करना आना चाहिए. तो उस रूम में जितने भी लोग थे, हमारे जितने भी मेंटर्स, हमने सबकी पिक्चर ली थी और हर मेंटर की 100 पिक्चर ऑगमेंट हुई थी, एंड देन हमने उसे उसी के फेस पे दिखाया कि हमने आपका डाला है, अपलोड करिए आपके पिक्चर, यू आर मिसिंग, नाउ इट्स डिटेक्टिंग दैट इट्स यू. So this was our approach and my challenge as well. Yeah, that's so honest. So till now, we all had known that what is SIH and how it really works. So nextly, we all know that team diversity is like too important for us, right? But how did you divide like responsibilities among your whole team? Okay, so forming the team should not be based upon choosing your friends. Very important. You need to be greedy at this point. Okay, if you think कि तुम्हारा कोई जूनियर है और वो तुमसे अच्छा है किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में, go for it. और एक टीम में एक से ज्यादा वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड वाले नहीं होने चाहिए. एंड्रॉइड तो इतना कोई जरूरी है ही नहीं, अनटिल अनलेस उन्होंने आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एंड्रॉइड का मेंशन किया हो. तो वेब डेवलपमेंट keep one. Machine learning, if you want machine learning and artificial वाले, you can have two. Okay, क्योंकि आजकल हर उसमें machine learning और artificial intelligence लग रहा है. And third should be database वाली चीज, क्योंकि मैं अपनी experience से बता रही हूँ, हमें database का as such idea नहीं था. तो हमने उसी वक्त AWS सीखा and then we showed them. तो एक database वाला compulsorily रखना, and one should be जिसे communication अच्छे से आती हो. Very मतलब वो ऐड करके बता दे पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं, बट वो बताए. एंड ऑल्सो आंसर देना भी आए उसे कॉन्फिडेंटली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, that's a smart strategy. So to all the audience, note this all strategies down, because like collaboration is really more important than the tech stack you use. So to all the audience, if you are having any question, please feel free to ask. Just keep it on in the connect chat box, and I'll be picking up any question. Is there any question from your side? Ma'am, so by that time, yeah, please ma'am, we have made a simple web page and about the problem statement. Can you please can I share the link of that, and can you please share me that what all should I have to add and what the changes I have to make in it? What is your problem statement? You just recite what is it. Real-time tracking of buses. 1 minute, ma'am. In small cities and tier 2 cities, public transport system has lack of real-time tracking, causing inconvenience to the communicators who face unpredictable bus schedules. This leads to overcrowding, wasted time, and reduced reliance on public transport. The problem acutes in the cities with growing population but limited digital infrastructure for transport management. Okay. Now, first of all, answer few questions of mine. क्या तुमने वो चार्टर्ड बस वाला ऐप देखा है? हाँ मैम. तो चार्टर्ड बसेस तो आर वेरी मच ऑन टाइम. दे आर रेयरली लेट. बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें ऐसा रहता है कि वो लेट हो. तो आपने अभी तक क्या सोचा इसके बारे में? बिकॉज मेरे को तो एक ऐप पता है इसका, वो है चार्टर्ड बस ऐप. मैम हमने मतलब सभी बसेस को इंटीग्रेट करके मतलब उनकी लाइव लोकेशन रखना, और जिससे अगर ट्रैवलर लॉगिन करे
तो वो मतलब कि जो उसको बस का नंबर या बस की कोई आईडी से वो सर्च करे और वो उसको ट्रैक कर सकता है कि कितने पैसेंजर है, कितना डिले है, कितने टाइम में वो लोकेशन पे उसकी लोकेशन पे आएगी, उसके मतलब लोकेशन पे आएगी या नहीं, पैसेंजर का काउंट वगैरह वगैरह, ड्राइवर का नाम वगैरह सब कुछ होगा। महिपाल, एक चलो बस ऐप है, वो सेम यही काम करता है, पता है आपको, सेम यही करता है। पता नहीं है मैम, लेकिन देखूंगा मैम। हाँ, आप देखना, जो चलो बस ऐप है ना और एक चार्टर्ड बस ऐप है, रिसर्च करना इन दो एप्स पे, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग सेम वही है जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ बसेस इन स्मॉल सिटीज। इवन ये जो एप्स हैं वो आपको मैप पे भी दिखाती हैं कि कहाँ पहुंच चुकी है बस और कितने टाइम में आएगी एंड उसके पीछे कौन सी बस है। इट्स वेरी डिटेल्ड और एक्यूरेट होती हैं सारी चीजें, विच इज गुड। तो रिसर्च करो आप उस पे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सेम ऐसा ऐप बन चुका है। ऑल्सो आई सजेस्ट यू पीपल वन थिंग, कि आप टीम सिलेक्शन बाद में करना, प्रॉब्लम सिलेक्शन पहले कर लेना एंड सिलेक्ट एनी 5 बेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू यू, और फिर वो अपने टीम मेंबर्स से डिसाइड करके गो फॉर वन। ओके ओके। एनीवन एल्स? Okay, one question is, what is the exact right time to get into hackathon? There's no as such exact right time, except if you are in your last year. Don't go for it. It's my suggestion कि last year में बहुत हसल हो जाएगा, तुम्हें अपना प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा और सब देखना पड़ेगा। तो second third year is fine, good to go. Second year में I did apply for it but couldn't make it, and in third year I did make it. So yeah, second third year is good enough. Next question is, ma'am, can we get your professional social media handle just as LinkedIn so that we can stay connected and reach out in case we need guidance in the future? Sure, Rishabh, why not? My LinkedIn profile is named Arkja Gaur. You all can see it. Okay. Okay, one more question. How to get selected for the final after internals? How to increase our chances? Does it depend on college? No, it doesn't depends on college. See, internal rounds are very easy to clear. Okay. What the one of the biggest challenges, जब आप वो अपना आइडिया वो 6 स्लाइड बनाते हो, पीपीटी बनाते हो, वो अपलोड करते हो, तो उसमें जो आपका प्रोटोटाइप रहेगा वो आप गूगल से प्रोटोटाइप मत निकालना, क्योंकि मैंने भी किया ये चीज। मैंने भी जब पहले अप्लाई किया था, मैंने भी गूगल से प्रोटोटाइप निकाल के चिपका दिया था एंड आई कुडंट मेक इट। और जब सेकेंड टाइम वी अप्लाइड, तो हम लोगों ने अपना प्रोटोटाइप तब तक बना लिया था और हमने उसी की फोटो लगाई थी। एंड सेकेंड, हमने उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली मेंशन किया था इकोनॉमिकली फीजिबल एंड प्रैक्टिकली फीजिबल। और वी ऑल्सो मेड अ वीडियो जिसमें हम 6 टीम मेंबर थे एंड हमारी वो वीडियो की लिंक भी डाल दी थी हमने। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आप करना मत भूलना। ओके। I'm in first and have no coding knowledge and I have a few problem statements. Okay. No problem. You approach your seniors for this. You also can have your seniors, no? So you approach your seniors and ask them if you can be of any help to them in your team. So yeah. Can I start? Yeah, apply for it. There's nothing wrong. At least you will learn something. Okay, first year में ऐसा नहीं है कि apply मत करो, apply करो, because I know first year में बहुत लोग होते हैं जिन्हें coding नहीं आती है, but I'll suggest कि apply करो आप। इंटरनल राउंड्स में अपीयर हो तो क्या होता है ना, वो जो 3-4 इंटरनल राउंड्स रहते हैं, आप उसी से इतना सीख जाते हो कि इन फ्यूचर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अप्लाई कर सको और आप जान सको कि प्रोसेस क्या होती है। तो there's no harm कि फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई फॉर इट, डू अप्लाई। ओके। They have a hardware problem. Is a working problem model necessary? What should the video be like? Very flashy and quick. Okay, so it totally depends on your problem statement and hardware. Okay, working model है तो जो हार्डवेयर जो वर्किंग मॉडल है ना, उसकी एक वीडियो बनाना और वो वीडियो में तुम अपनी वॉइस एक्सप्लेन करना एंड उसकी लिंक अपलोड करना। और ऑल्सो जो 3rd 4th नंबर की स्लाइड रहती है उस पर हार्डवेयर की फोटो अपलोड कर देना। दिस इज गोना मेक योर पीपीटी अट्रैक्टिव एंड
For Don't worry, guys. Like we will provide you the handle so you can stay connected with Arkja Gaur. So don't worry about that. okay, so this is the last question, I guess. Ma'am, I'm in 4th year right now. Should I participate or should focus on placement? No, Anuj, focus on your placement. I think time is gone at this point for hackathon. Okay, so I think we are done with this doubt session. I'll continue with my experience a bit more, and then I'll hand over to Prachi. Okay. Okay, so speaking of internals, तो are easy. See, there was one problem statement जो मैंने इस बार का देखी थी, which was जो ओपन माइंड्स रहती हैं उसमें से यू हैड टू डिटेक्ट कि कोई इंसान तो नहीं है या कोई रॉक तो नहीं गिर रहा है, तो यू ऑल पीपल कैन रिसर्च ऑन दिस वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब इस बार की प्रॉब्लम स्टेटमेंट वर नॉट गुड इनफ जितने पिछले साल थे, बट ये एक ओपन माइंड वाला है, रॉक वाला. इट इज रियली गुड. आई सेंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इट इज वेरी गुड. यू शुड रिसर्च अपॉन इट, क्योंकि जो ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, एक्चुअली जो ओपन माइंड्स रहती हैं उसमें जो लोग फंस के रह जाते हैं, जो पत्थर गिर जाते हैं, तो these type of problems are the real problems. Okay, and I don't want to criticize, but आजकल people are more focusing on supplying food chain वाली चीजें, cloud kitchen and all. They are not focusing on software making and software building, which can for sure give a good amount in future. मतलब उसकी return बहुत अच्छी रहेगी as compared to these things, because our future is totally tech based. So if you are doing engineering, you are into BTech, try to, and if you want to have your own startup, then try to work upon or making some startups or startups related to machine learning, AI, Gen AI, LLMs. Work on these. और जब ये सारी चीजें बनेगी ना, तो these things will be easy for you कि फ्यूचर में तुम्हारा जो टर्नओवर है वो अच्छा हो जाए. और इवन जो इतनी सारी योजनाएं कर रही है सरकार इनोवेशंस पे और फंडिंग्स पे, तो these things will help you out a lot. Okay, there are 2 more questions. How should the PPT be simple and clean or explaining everything? See, PPT को ज्यादा हौश पौश नहीं करना है और ज्यादा लिखना भी नहीं है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं रहेगा कि वो तुम्हारी पूरी PPT पढ़े. तो इंस्टेड तुम अपनी फोटो जो तुम वीडियो बनाओगे या फोटो क्लिक करोगे प्रोटोटाइप की, वो लगा दो और उस पर हेडिंग डाल दो कि आर वर्किंग प्रोटोटाइप, और जो हार्डवेयर लगाओगे हार्डवेयर की लगा दो आर वर्किंग हार्डवेयर, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो फर्स्ट 2 स्लाइड्स में, देन कीप इट अ बिट पिक्चर बेस्ड, क्योंकि वो बस गो थ्रू करते हैं, दे आर नॉट गोना रीड इट totally your PPT. I have no team, so about participating, what should I do? How can I help in that? Start networking. This is very important. Networking is important. Okay, Prachi, so what next? Yeah, sure. We want to ask you that what can be the key elements of winning pitch, because we know that pitching is too important, right? Yeah. So if any suggestion you can give that a team should not make this type of mistakes or should avoid, like sincerely we should avoid those mistakes. Okay, so like I said, you should know how to sell yourself. Now how you will sell yourself कि अगर जो तुम्हारा प्रोटोटाइप जो तुम्हारा मॉडल बना है, पहले उसे तुम थॉरोली एक्सप्लेन करो कि तुमने क्या क्या. और जो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने मशीन लर्निंग करी है और दूसरे ने फ्रंट एंड करी है तो मुझे फ्रंट एंड नहीं आता और उसको मशीन लर्निंग नहीं आता. नहीं, तुम लोग कर रहे हो सीखने के लिए, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली करो. दिस इज अ टीम, तो एवरीवन शुड नो एवरीथिंग इन दैट टीम. ठीक है, एटलीस्ट अ बिट ऑफ इट. तो जब तुम पिच करोगे तुम्हें अपने मॉडल का अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसा क्या है, इकोनॉमिकली कैसा फीजिबल है, प्रैक्टिकल कैसा चल रहा है, एंड उसके अंदर का टेक स्टैक. दे विल ऑल्सो आस्क, वो तुमसे पूछ लेंगे कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है. ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे मॉडल से रिलेटेड है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दिल आस्क यू आर्डिनो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, होता क्या है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है.
तो यू शुड बी थॉरो इनफ कि मैं अगर ये चीज यूज कर रहा हूँ तो क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं अगर रेस्टनेट 50 मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रहा हूँ तो मैं क्यों यूज कर रहा हूँ. तो पहली चीज जो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू शुड बी थॉरो विद इट. एंड देन जो तुम यूएसपी यूज कर रहे हो, यू शुड बी थॉरो विद दैट एज वेल. तो तुम्हारा R&D शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ. तो यस, योर रिसर्च पार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग. और जब तुम रिसर्च कर लोगे एंड व्हेन विल आस्क यू क्वेश्चंस, तो तुम ऑटोमेटिकली उसे आंसर कर दोगे. और प्लीज, जो तुमने जिस पे काम नहीं किया या जिसे नहीं पढ़ा है, तो उसे तुम्हें हाइड करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वहां से तुम्हारे पॉइंट्स नेगेटिव होने लगेंगे. अगर तुमने मॉडल बनाया क्राउड डिटेक्शन का, तो ही उससे बताओ. और अगर तुमने सोचा है कि तुम बनाओगे और तुमने रिसर्च भी नहीं करी है, डोंट गो फॉर इट. जस्ट डोंट. बताने की, खोलने की, मुंह खोलने की जरूरत भी नहीं है, वरना फिर वो तुमसे इतने क्वेश्चंस पूछेंगे, जहां तुम अटके उसी से रिलेटेड फिर वो तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे. ओके, या Yeah, thank you. Like clarity बहुत जरूरी है, मतलब we can say that, right? While you are reality pitching check. something, yeah, we do not need to show the how complex our system or whatever project we are doing. Just get on the point. Yeah. So coming to this, can you just share us that how valuable the mentorship like comes while doing or making any project or startup? मेंटरशिप. सो इन आवर केस, जो मेरी टीम थी ना, उसमें देयर वर 2 सीनियर्स हु वर वेरी प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क. दे डिड इंटर्नशिप फ्रॉम DRDO and ISRO. So in our case, we didn't go for mentorship as such, but we did ask help from our HODs, and they suggested us ki do this, do that. Rest, we as a team worked really well and we did really hard work for it. तो yeah, आपको अपने आप में केपेबल होना पड़ेगा, बिकॉज तुम 10 लोगों को से अगर तुम अपना शेयर करोगे, तो तुम्हें 10 लोगों को अलग अलग समझाना पड़ेगा, एंड इट्स गोना वेस्ट योर टाइम, ट्रस्ट मी. तो इट्स बेटर कि पहले अपनी टीम में अच्छे से थॉरली डिस्कस कर लो, एंड अगर स्टिल तुम्हें नहीं आ रहा हो तो कंसर्न योर HOD, which is good enough. And don't go for LinkedIn की जो SIH winner है तुम उससे टेक्स्ट कर रहे हो. मतलब I'm just saying, क्योंकि मेरे पास इतने सारे DMs आते हैं कि दीदी प्लीज ये बता दो कि कैसे जीतना है, मेरा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं इसमें आगे क्या करूँ. नो, तुम्हें अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां अगर तुम फाइनल राउंड पे भी पहुंच गए तो आई एम नॉट गोना कम देयर एंड हेल्प यू आउट कि ये बताओ वो बताओ. ठीक है, तो पहले तुम खुद के मेंटर बनो, एंड उसके बाद तुम्हें इशू आ रहा है तो कंसर्न योर HOD एंड नो वन एल्स. Yeah, that's good to hear. So like it was a long journey, because like staying there and doing coding straight for 24 to 38 hours, it's not like too easy. So how do you stay motivated in that time? How do you control or like handle the stress and time pressure? There is nothing like stress if you have people, fun loving people, जो कोडिंग भी करते हैं और मजाक मस्ती भी करते हैं, तो इट्स गुड. ऑल्सो ऐसा नहीं है कि अगर कोई तमिलनाडु की कोई टीम आई हुई दूसरे कॉलेज की, एंड यू थिंक दे आर योर अपोनेंट्स, डोंट टॉक टू देम, डोंट डू दैट. गो टू देम, आस्क फॉर व्हाट दे आर डूइंग, मे बी तुम्हें कोई इंस्पिरेशन मिले और एट लास्ट मोमेंट तुम उसमें कुछ ऐड ऑन कर सको. तो कीप इंटरेक्टिंग विद योर अपोनेंट्स एज वेल, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है ना, तुम्हारे अपोनेंट की कमजोरी, तो वर्क अपॉन इट. तो तो तुम्हारा एक कंपटीशन बना रहेगा, ओ टीम बी ने ऐसा कर लिया, ओ ऐसा कर लिया, ठीक है मुझे इससे ज्यादा अच्छा करना है. तो दिस विल नॉट मेक यू बोर्ड एट एनी पॉइंट, यू आर गोना लव इट. आई थिंक दिस एक्सपीरियंस ऑफ माई SIH was the best. पूरे 4 years में इंजीनियरिंग में SIH was the best part of my life. Too good to hear. Now one more question is there from the audience side, that how to make an effective prototype. इफेक्टिव प्रोटोटाइप इज, जो देखो इफेक्टिव प्रोटोटाइप में तुम्हें अभी एज सच कोई USP अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल राउंड है. तो जो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है ना, उसको पहले तुम बना लो, और अगर उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचे तो गो फॉर 1 USP, दैट्स इट. और वो एक USP ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें लगे कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फीसिबल है, हमें बहुत पैसे दे सकते हैं इन फ्यूचर में. ठीक है, बिकॉज एट द एंड गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए. लाइक आई एम सेइंग इट स्ट्रेट, कोई तुम मदर टेरेसा नहीं हो जो वहां जाके तुम सोशल वर्क करो. नो, you need money, that firm needs money, government needs money.
we need to increase our GDP. So think of money. SIH is all about money. ठीक है, क्योंकि बाद में जब वो तुम्हें पिच करेंगे तुम्हें मुश्किल से 5% देंगे. इक्विटी इज गोना बी 5%, हार्डली 5%. तो तुम्हारी जो मेहनत है वो कहीं काउंट नहीं होगी. तो एट दिस पॉइंट तुम अपने आप के लिए सोचो और जो प्रोटोटाइप है उसमें एक यूएसपी डालो एंड दैट्स इट. Yeah. So from audience side, it's like what resources we should look up for the research on our problem statement. ओके, तो देखो ज्यादातर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे गिव यू डेटा सेट देते हैं. जैसे एक मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं देते हैं. तो पहले तो रेफर चैट जीपीटी पे यू गो एंड आस्क, एकदम उससे बोलो चैट जीपीटी से कि भाई तू मुझे ऐसे समझा जैसे मैं क्लास 5 में हूँ. पहले उससे क्लियर करो. फिर उसके बाद तुम उससे बोलो कि गिव मी 5 वेबसाइट्स जहाँ पे जाके मैं और R&D कर सकूं या डेटा सेट ले सकूं. तो go for it. And if any of you is going for DRDO या ISRO के या Ministry of Defense की problem statement which requires the satellite data and real-time data, then there's one website I'll write in chat box which is NASA Averus. Okay, so this website is best if you're going for satellite images वाली चीजें, so you can go for this. Yeah, it will be helpful. So nextly, I want you to ask like 3 golden tips that you can give to everyone, or what skills we should have like participating in our first ever hackathon if we are starting from now. Okay, so hackathon is not a rocket science बिल्कुल भी नहीं. It's very easy and it's very मतलब वो जो पूरी process होती है from September to December, it's fun. You are gonna enjoy it and you are gonna learn a lot. एक यही टाइम पीरियड, तुम कॉलेज में इतना नहीं सीखोगे जितना इस टाइम पीरियड में सीख लोगे. डिफरेंट स्किल्स, वेदर इट्स मशीन लर्निंग, फ्रंट एंड, व्हाटएवर इट इज, यू आर गोना बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, व्हिच इज गुड. ठीक है, एज अ फ्रेशर इट इज गुड. सो फर्स्ट थिंग इज इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. सेकंड, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम अपने ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्लियर नहीं हो, उसी में अगर तुम्हें डाउट्स हैं, तो इट्स नॉट गुड. ओके, यू नीड क्लैरिटी. Then third is team tips. Like teamwork is important. तुम एक ही इंसान पे लोड नहीं दे सकते. तुम्हें लग रहा है कि टीम लीडर है तो टीम लीडर को करना चाहिए. No, it should be equally divided. And there should not be competition. कि मैंने ये भी देखा है कि ऐसा रहता है कि टीम लीडर है तो they hate team leader. कि टीम लीडर क्यों है? No. Work like a team, love like a team, fun like a team. तो just go for it. You're gonna love the process and you're gonna learn a lot. Then next is confidence. Each one of you should have confidence. No matter तुम कितने shy हो, no matter तुम कितने introvert हो, उस time period में 3-4 महीने रहता है. Work on your communication skills and work on your confidence. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक बंदा बता रहा है तो एक ही बंदा बता रहा है. Mentors will ask randomly. क्या पता तुमसे कुछ भी पूछ लें, क्या पता तुम ML वाले और तुमसे उन्होंने फ्रंट एंड का पूछ लिया. तो you should be confident enough. So I think these 3 aspects are very important to win the hackathon: clarity, teamwork, and confidence. I hope that audiences are writing this down, because we are getting to learn these 3 ideas right from the person who has already won and who has done these all things. So I want to ask in the audience that how many of you are there who is participating for the first time, or who has already like participated in any other hackathons? I want a quick raise, or you can type in chat. Yeah, so related to this, like if anyone is participating for the first time, it can happen that they might not win. So how to gain a value like if they don't win this hackathon? If it's your first time, I'll suggest go for something very thrill वाली problem statement. क्योंकि ये जो thrill और difficult problem statements होते हैं ना, उससे तुम बहुत सीखते हो. इसमें बहुत चीजें apply करने को रहती हैं and उससे तुम्हें ज्यादा knowledge मिलती है. You'll get to know कि also जो first timers है ना, I'll suggest कि जो भी problem statement में तुम काम कर रहे हो, फर्स्ट टाइमर के जो सेकंड टाइमर है, थर्ड टाइमर है, उनसे भी मैं ये बोलूंगी कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें
जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स आजकल बहुत चल रही है, तो गो फॉर करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, जिससे कि तुम अपना पॉइंट रख सको अपने पीपीटी में भी, कि अगर अभी रिसेंटली जैसे हम हमारे पास पॉइंट था कुंभ मिलेगा और सिंहस्थ मिलेगा, तो जो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका जो भी करंट अफेयर है, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है, उससे तुम अवेयर रहो। और फर्स्ट टाइमर्स को तो मैं यही सजेशन दूंगी कि डोंट थिंक टू विन एट दिस स्टेज। आई मीन इट्स गुड अगर फर्स्ट टाइम में तुम फाइनल राउंड में चल जाओ, इट्स वेल एंड गुड, बट तुम SIH में ये मत सोच जाओ कि मुझे जीतना है। SIH में हम लोग तो सोच के गए थे कि हम बहुत सीखेंगे एंड हम फन करेंगे, क्योंकि 2 दिन तो हमारा वहीं पे स्टे रहेगा, तो हम घूमेंगे फिरेंगे। हम लोग ये सोच के गए ही नहीं थे कि वी आर गोना विन। हमारा माइंड सेट ये था कि हम वहाँ पे सीखेंगे, दूसरी टीम्स को से पता करेंगे वो क्या कर रहे हैं, हम लोग घूमेंगे जहाँ पे भी हमें सेंटर मिलेगा। तो ये मत सोचना कि हमें जीतना है, ये चिल माइंडसेट से जाओ, just be chill and love the process. Yeah, that's so true. Like, it's not for only winning, it's also about learning and growth. Yeah. So I want to ask you that how did winning SIH impact your personal growth and opportunities? See, I'm getting offers. One of the example, I am right here as a speaker with you all with CodeNeuraX. Also, I got 2-3 more offers from different organization, and also it's gonna make my, like, it has made my resume very heavy. Okay, तो out there in your interview you can say कि मैंने hackathon जीता हुआ है, और normal hackathon नहीं, स्मार्ट इंडिया hackathon जीता हुआ है। तो क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर तुम किसी कंपनी में जा रहे हो and you will tell them कि तुम्हारा problem statement क्या था, and if in case that problem statement aligns with that company ki needs, so maybe they are gonna take idea from you and give you equity of it. That is pretty possible. So yeah, these are the opportunities which I'm gonna get. Also, I got the cash prize. So yeah. So from you guys, if you're having any question, feel free to keep it in the chat box. I'll be asking that questions to Arkja, and also by that time, in your opinion, Arkja, what makes SIH different from like many other hackathons are there, right? So how it's special in your point of view? The best thing about Smart India Hackathon is there is no partiality. Okay, मतलब क्या होता है कि दूसरे कोई भी कॉलेजेस करवाते हैं हैकाथॉन, तो दे प्रेफर कि उनकी टीम थोड़ा ऊपर रहे, उनका कॉलेज थोड़ा ऊपर है, बट देयर इज नो पार्शलिटी। और तुम अगर क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, किसी भी हैकाथॉन के लिए तुम्हें मैक्स 1 मंथ मिलता है टू अप्लाई एंड देन गो फॉर इट। तो बट इसमें क्या रहता है, हैकाथॉन में तुम्हें एक थोड़ा प्राउड फीलिंग आती है कि यार गवर्नमेंट इज गिविंग मी एवरीथिंग, दे आर गिविंग मी स्टे एंड लाविश स्टेज। ओके, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे दिया, वो बहुत अच्छे स्टे रहते हैं। तुम्हें टिकट्स दे प्रोवाइड, मनी दे प्रोवाइड, एवरीथिंग दे प्रोवाइड, TADA सब तुम्हारा रिटर्न हो जाता है। तो आई फील इट्स अ प्राउड थिंग कि तुम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, ना कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी और के लिए। तो नॉर्मल हैकाथॉन्स की प्रोसेस इतनी कोई इंटरेस्टिंग नहीं होती, तुम उससे इतना नहीं सीख सकते हो जितना तुम हैकाथॉन में सीखोगे, बिकॉज यू आर गेटिंग 6 months स्ट्रेट और कट स्ट्रेट टू 4 months यू आर गेटिंग। तो तुम उसमें उस पूरी प्रोसेस में तुम इतना अलाइन हो जाते हो उस पर्टिकुलर चीज के साथ कि तुम्हारी लर्निंग बहुत हो जाती है। तो या Yeah, one question is there from one of our member, like how did you handle the situation when they pointed out flaws in your solution? ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग तो एकदम फन के मूड में थे, तो जैसे ही वो फ्लॉ हमारा पॉइंट करते थे तो वी यूज टू बी लाइक कि अच्छा ये है, चलो देखते हैं, सोचेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम सोते रहते थे। ऐसा नहीं कि हम एकदम कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, हम लोग चांस देते कि हम लोग सो जाए, ओके, एंड वर्क कर लें। तो हम लोग बहुत कूल रहते थे इन सब चीजों के रिगार्डिंग कि अगर कोई फ्लॉ दे दिया, और वो ऐसे एकदम फ्लॉ नहीं देते क्योंकि वो आपका मोरल डाउन नहीं करना चाहते हैं, तो एकदम से ऐसा फ्लॉ नहीं देंगे कि आपके में ये कमी है, वो कमी है, until and unless वो उन्होंने तुम्हारे में, अगर तुम सामने से बता रहे हो कि ऐसा है, तो दे आर गोना कैच योर फ्लॉज। और अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो वो बताएंगे नहीं, वो तुम्हें बस सजेशन देंगे। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू नीड टू बी क्लियर विथ योर पीएस। अगर तुम अपने पीएस से ही क्लियर नहीं रहोगे तो फ्लॉज निकालेंगे,
और अगर तुम अपने पीएस से एकदम क्लियर रहोगे तो वो तुम्हें सजेशंस देंगे, एंड दोनों में डिफरेंस होता है. इफ दे आर गिविंग यू सजेशन देन यू आर ऑन द राइट पाथ, and if they are giving you flaws then you might not be on the right path. Yeah, and it might happen with us sometimes कि शायद आपके साथ हुआ होगा. Many times on the right like worst possible time the things may get worst, like everything stops working, maybe the system get crash and everything. So how do you bounce back and how do you handle those situations if that happens anytime? For this it's better to have your model working in at least 2 to 3 laptops. एंड कि अगर सपोज मेरे लैपटॉप में नहीं चल रहा या क्रैश हो गया तो फाइन, चिंता क्यों करनी है जब दूसरे लैपटॉप में, तो 2-3 लैपटॉप में चेक करके रखना कि वो चल रहे हैं कि नहीं. एंड ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है आज सच, क्योंकि हमारे केस में तो नहीं आई थी, क्रैश नहीं होता. हाँ, लास्ट मोमेंट में ये हुआ था कि हमारा जो लाइव कैमरा था वो नहीं चल रहा था, बट वी डिड फिक्स इट, क्योंकि हमारा मॉडल तो चल रहा था, बस वो HDI कैमरा नहीं चल रहा था, बाकी तो इट वाज गुड. Yeah. And how can it like team manage time better during that intense SIH days, like before 2 days, before 3 days? Any hacks that you are having? I will prefer कि जो तुम्हारा मॉडल है वो तुम एटलीस्ट 1 वीक बिफोर बना के रख लो, ठीक है, क्योंकि तुम नहीं इतना कोप कर पाओगे कि तुम्हारा जो पीएस है तुम उस पर भी काम करो, जो तुमने यूएसपी ढूंढी उस पर भी तुम काम करो, एंड देन वो जो हर राउंड के बाद आके सजेशन जो दे रहे हैं तुम उस पर भी काम करो, तो ऐसे तुम बहुत मेसअप हो जाएगा. तो टारगेट ये करो कि जो तुम्हारी डेट आई है SIH की उसके 1 हफ्ते पहले तुम एटलीस्ट अपना मॉडल बना के रखो, वर्किंग रखो, और फिर वहां पे जाके जब फर्स्ट राउंड रहेगा ऐसा नहीं है कि तुम पूरा ही डिस्क्लोज कर दो. नो, नेवर डू दैट. ओके, तुम्हारा कोई 5% ही बताना है तुम्हें पूरे मॉडल का फर्स्ट राउंड में, जिससे कि वो अगर कोई सजेशंस दें तो तुम्हारे पास ऑलरेडी हो. तो या Okay, now the next question is from one of our audience, that how to reply to the question about which we aren't aware. Okay, तो उनसे तुम बोलना कि सर विल वर्क अपॉन इट, दैट्स इट. और फिर जब तुम ये एक सेंटेंस बोल देते हो सर विल वर्क अपॉन इट, वही जो वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वही तुम्हारे सजेशन लिस्ट में आ जाता है कि तुम्हें नेक्स्ट राउंड में तुम्हें ये चीज पर्टिकुलर चीज शो करनी है. तो फिर उसके बाद तुम जब नेक्स्ट राउंड होगा उस पर काम करके उन्हें दिखा देना. तो और हाँ, अगर उन्हें बोला है कुछ क्वेश्चन पूछा और तुम्हें नहीं आता है तो प्लीज अपने मन से मत बोलना, फिर वो एक के बाद एक क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं और फिर तुम एक जाल में फंस जाते हो और फिर तुम्हारे 2 सजेशन जो बनने रहते हैं वो तुम्हारे 10 बन जाते हैं, जो कि डिफिकल्ट होता है. Yeah. And from the Aditya, it's like, Arkja, if you were given 2 to 3 more months for your project, how would you have improved it further? I mean, were there any features left to add, or was your project already 100% complete and ready for deployment? Also, is it necessary to prototype to be fully completed? See, prototype, yes, it is very important कि prototype तो तुम्हारा at least complete हो. Prototype क्या है? Do you know the definition of prototype? See, prototype वो है जो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका पार्शियल वर्किंग मॉडल, ठीक है, उसका जो वर्किंग मॉडल है सिर्फ तुम्हारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वो होना चाहिए. देन USP इज द सेकंड थिंग, ठीक है. तो प्रोटोटाइप तो इज वेरी कंपल्सरीली नीडेड. देन ही आस्क्ड कि हाउ वुड यू हैव इम्प्रूव्ड इट फर्दर. Well, it totally depends on mindset of a person. अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा प्रोजेक्ट और आगे जाए तो I think 2-3 months are enough to work upon it and ponder upon it and make it good enough. और कोई भी स्किल आज के टाइम में सीखना requires hardly a week or 2. That's it. And if there's any feature left to add, or was your project already... See, no, our project was not 100% complete. We were ready with our model. We were ready with our 4 models. जितने के हमारे 4 models थे हम उसके साथ ready थे. हमारा हार्डवेयर पूरा ready था. जो एक चीज हमारी रेडी नहीं थी, डिप्लॉयमेंट ऑन अ वेबसाइट. क्या होता है ना, मशीन लर्निंग को वेबसाइट पे डिप्लॉय करना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, वेरी टफ इट इज. तो हमारा बस वो पार्ट कंप्लीट नहीं था, बट विद द हेल्प ऑफ आवर टीम मेंबर्स वी डिड इट, दो एट लास्ट मोमेंट, बट वी डिड इट. सो या. Yeah, thank you, Arkja, for answering this question.
And one more thing I want to know that beside like coding and communication skills or any of the languages that we already know, but beside that, what is that one skill that really helped you to winning this hackathon? Or we should right now, we should know that skill or we should have? I think everyone should know Python, first point. ठीक है, क्योंकि Python is a language जो तुम्हारी हर कहीं हर जगह काम आ जाती है. Python you should know, and apart from coding and communication skills, confidence is very important, and the skill of networking. Okay, SIH is a place where you will network with good people. ठीक है, और ऐसे लोग जिनसे तुम फ्यूचर में काम निकलवा सकते हो और काम ले सकते हो. तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर फील्ड. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में तो हर चीज नेटवर्किंग के बेसिस पे होती है. तो इफ यू थिंक कि यू आर इंट्रोवर्ट इनफ एंड इफ यू थिंक कि दोज आर माय अपोनेंट्स, देन यू आर रॉन्ग. यू आर देयर टू नेटवर्क. Even if you'll not win, at least you'll have good networks, which might get you better job than winning SIH. Okay, so networking skill is very important. Okay, so as our audience is being active, there from their side the question is there like what's the best way to handle conflicts or different opinions during crunch time? Okay, so conflicts usually occur when people are not satisfied in your team. You need to work on the voting system कि अगर तुम्हारा प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि अगर तुम्हें टीम बनानी है तो पहले ही कोई 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी करके रख लो एंड देन आस्क योर टीम मेंबर्स टू वोट कि कौन सा बेस्ट है. तो इस टाइम पे द बेस्ट थिंग इज वोटिंग सिस्टम कि कौन चाहता है और कौन सोचता है कि ज्यादा बेनिफिशियल, देन विल गो फॉर इट एंड अदरवाइज विल नॉट गो फॉर इट. तो टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ टीम, गो फॉर वोटिंग सिस्टम. इट्स द बेस्ट वे. Yeah. Hello audience, let's make this session engaging more. Ask more and more questions. If any doubts are there, please feel free. And one more question is there from the Palak, that what impressed the judges most about your project tech depth or design or storytelling? What was it? I think all of the above. Yeah, so true. So now if anyone from us like wants to be entrepreneurs, so do you think that SIH can be the stepping stone for this? Sorry, can you please repeat the question? Yeah, I was asking that if anyone wants to be an entrepreneur, right? So do you think that SIH can be the stepping stone for that, so that we can be like for more learning and exposure and everything? Definitely. After you win SIH, I'm speaking of after you win, there's a session, pitching session जो दिल्ली में होता है. Also you get internship at AICT. तो you get these two things कि तुम internship भी कर सकते हो और pitching भी कर सकते हो. तो जो तुम्हारा problem statement रहेगा, जिस भी डिपार्टमेंट का रहेगा, वो डिपार्टमेंट के टेक पर्सनल्स आएंगे to pitch and to ask कि और क्या improvement कर सकते हो and to spend money and give you fundings. So yes, it is one of the best platform if you want to become an entrepreneur and want to go into business field. So, yeah, so as you already told about how to make the PPT and everything, but one more question is there, that how to make impressive PPT for SIH from our audience side. So can you just like fast repeat in something? Sorry, please can you repeat? There was some glitch. Network Okay. glitch. Okay, so I'm asking you that from the audience side, there's a question that how to make impressive PPT. We should add visuals, photos, and like that things. Yeah. Okay. तो या my suggestion is don't keep it theoretical. ज़्यादा theory लिखोगे तो किसी पास टाइम नहीं है वो कोई इतना रीड करे. Apply realistic pictures. चैट जीपीटी की और गूगल की निकाली हुई पिक्चर्स मत लगाना. जो तुम्हारा रियल प्रोटोटाइप बना है, जो तुम्हारा हार्डवेयर बना है, सॉफ्टवेयर बना है, जो भी बना है उसकी पिक्चर्स लगाना. थ्योरी कम रखना. एंड प्लस पॉइंट इज कि तुम अपनी वीडियो बना सकते हो अपने मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए. और जो लास्ट स्लाइड रहती है जिसमें यू कैन अपलोड द लिंक्स जिससे तुमने रिसोर्सेज लिए एंड ऑल.
वहां पे वो डाल देना कि ये ऐसी ऐसी लिंक है, here we have टोल्ड कि कैसे क्या हमारा मॉडल वर्क करता है, और फिर वो यूट्यूब पे अपलोड कर देना और SIH को टैग कर देना, तो इट्स गोना बी गुड इनफ. Yeah. And I want to ask you that what's the one lesson that you learn after winning or participating in SIH that you are following your daily life, your professional or academic? Yeah, one thing you are doing like on daily basis, because after experiences that what it takes to do like SIH and everything. Well, when we were preparing for SIH, I think it helped me out in each and every way. It helped me in my personal life. इससे ना एक रूटीन बन जाता है, रूटीन बन जाता है, आप प्रोफेशनली स्टेबल हो जाते हो, आप प्रोफेशनली और एक्टिव हो जाते हो. ठीक है, देन यू नो हाउ टू डील विथ थिंग्स, हाउ टू डील विथ पीपल आउट देयर, यू नो हाउ टू कोड 2 लैंग्वेजेस. ठीक है, तुम यहीं पे आके सीखोगे, तुम ऐसे यूट्यूब से नहीं सीखोगे. जब तुम SIH पे काम करोगे तभी तुम सीखोगे 2 लैंग्वेजेस. एंड मतलब ये जो 4 months रहेंगे, ट्रस्ट मी, दीज 4 months आर गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग मंथ्स ऑफ योर्स, क्योंकि तुम बहुत प्रोडक्टिव हो जाओगे इन 4 months में. यू विल स्टार्ट लविंग योर वर्क, योर डिग्री विच इज BTech. You are gonna love it, trust me, and then you will think ki you are on a right path. So SIH, preparing for SIH will for sure make your path clear, and though it's gonna be hectic, I know it's gonna be hectic, but you know, when you will start getting the validations and result, you'll love it. Also, I'll suggest ki when you will make this prototype na, uski kuch parts upload it on LinkedIn, so it's gonna help you there as well. Okay, thanks for that. So now Aditya is asking that which field should we focus more on, the UX like easy of use or good UI of website, how to create the internal round easily, UI such as complex 3D animation? I think it totally depends on what your problem statement is. Because if your problem statement asks for UI UX, then yeah, you can make it attractive, but focus more on working upon the working part of it, how smoothly it is working and how good it is working. It should not lag even if your network, there's gonna be a network issue, so it should not lag. So yeah, 3D animation is, I think, should be your last choice. पहले तो make it work, then make it colorful, and जब तुम्हारा पूरा सब कुछ हो जाएगा, then add on or go for 3D animation. And speaking of how to crack internal round is all about pitching and your prototype. Yeah, thank you for that. And Arkja, if you don't mind, that can you just share your screen and show the PPT to all our audience, so just they can get the idea how to make our PPT. Okay. Actually, I had my laptop format. I'm not having the PPT which I use there, but give me a minute. I'll try. Yeah, no worries. So by that time, to all the audience, if you are having any other question, please keep it in your mind and we'll be asking further. So from you guys, how many of you already had the problem statement like decided, or some of you are just planning to what to do next, on which phase you are right now, like working with the team or just planning with the team, finding some good teammates, on what phase you are? Just tell me in the comment box. I want you guys to be engaging in the session because you are attending this session, as you can learn from someone who has been already in your shoes and you are planning to win, right? You are I'm asking you to all that if you had to pick front end, back end, or pitching, so what's your strongest skill? I want to know about your. Yeah, okay, I got it. I'll share my screen. So this was my team, and this was the demo link which we uploaded कि ऐसा हमारा work करेगा जो
problem statement रहेगा. And this was the first page. See, we got our business model ready. We got our innovation and uniqueness ready. Problem addresses we wrote ki how are we gonna address our problem and the approach of the idea. All in very short and crisp way. Okay, you all can take picture of it. This was the one which we uploaded there after our internal round. Then second was our technical approach. See, in technical approach, we didn't go for any theory and all. We just made flow charts and the working charts of it and the tech stack and implementation. Very important. Next is feasibility and viability. Like I said, very important. What they care about is money and future growth of your this model. So analysis of feasibility, USP, strategies for overcoming the challenges and potential challenges and risk. Okay. You might be thinking why we wrote this potential challenges and risk. That's because you should be self-aware कि इसके क्या-क्या challenges हो सकते हैं and you should be aware कि हम उसे कैसे solve कर सकते हैं. Overcoming the challenges. Okay. Because they might ask. Then next is this use case and dependencies. See, this crowd density and real time monitoring, ये जो दो pictures हैं, ये इसका data set हमने Kaggle से लेके we made the initial model और फिर उसके बाद हम लोग further गए थे. फिर further हमने अपना personal अपने लोगों पे apply किया था. Okay. And then the last are the links and you can see this, the references and all. Okay, so any doubt? You all took the picture of it? Okay. So I'll share this PPT. I didn't send this PPT to Prachi. I didn't send you people this PPT. Actually, मुझे भी कल ही मिली है. So I'll send it to you and you can share with the kids. Okay. Yeah, sure. Thank you for that. Now, from your perspective, what do you think that judges prefer innovative raw ideas or like polished working prototypes, or what they usually look for in the hackathons? If we are talking like beyond SIH in a smaller hackathons, like related to like university, state level or anything. They look for your brain, they look for your innovation, and most importantly, they look कि तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट मत करो कि इफ यू आर मेकिंग एन ऐप और अ वेबसाइट फॉर रूरल एरिया तो सिर्फ वहीं तक ही सीमित रह जाए. सिर्फ उनके लिए नहीं देखना है, तुम्हें एक बिग फर्म्स के लिए भी देखना है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो रूरल एरिया वाले लोग आके विल नॉट पिच यू. People will be these big firms and MNCs who are gonna pitch you. ठीक है. So first of all, innovation is very important, and second is कि whether or not your problem can target large amount of audience or not. Okay, thank you for answering this. And to all the audiences who want like personally guidance, then we, the CodeNeuraX team, are there for you. You can anytime reach out to us through our email codeneurax@gmail.com. That is, so you can just feel free to ask us any question if you are finding trouble of selecting any like problem statement, or you are in like requirements gathering phase or anything. You can just ask us. We all have the resources lined up for you guys. And what are the mistakes that you noticed that repeatedly many teams make in front of the judges? Flexing more.
मतलब जो उन्होंने किया नहीं है वो उसे भी मेंशन कर देते हैं एंड दैट्स वेयर दे मिस, क्योंकि जिस चीज पे आपने भी काम ही नहीं किया और आप उसे अपने जजेस को बता रहे हो तो दे आर गोना आस्क क्वेश्चंस और फिर वो तुम्हारे फ्लॉज निकालेंगे। तो दिस इज समवेयर जहाँ बच्चे सबसे ज्यादा लैग करते हैं एंड सेकंड इज नॉट इनफ ऑफ R&D। So these are the two places where I think people lag a lot. Yeah, like we should take care of that. So one is asking that for creating flowcharts in the PPT, can we use ChatGPT or it is not preferable choice? See, flowcharts definitely go for AI. Why not? PPT, I think you can have the matter from GPT, but I'll prefer PPT manually बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और flowcharts तो go for AI. इतना भी hard work करने की जरूरत नहीं है कि एक flowchart बना रहे हो. Use AI. Yeah, great. And what was the tech stack you used or you'll suggest us to use? See, how will I suggest you people if I don't know what problem statement you are using? But speaking of my tech stack, we used YOLO V8, YOLO V5, we used ResNet 50. These are the models which we used because basically my problem statement revolved around the machine learning. So tech stack में ये 3 models we used, YOLO V8, YOLO V5, ResNet 50. Then language we used was Python. Then a few libraries like TensorFlow, NumPy, Matplotlib, and then there's one library SMTP which is for the mail purpose, जो हमने mailing किया था. Then there is Arduino IDE, which is very important if you're working with hardware. And yeah, these were the basics which we used. If you wanna know more in detail what all tech stacks we used for our this object detection and all, then you can contact me via LinkedIn. I'll let you know what tech stack we even used for our web dev and UI UX and all. Yeah. So one question is there from our audience that did you notice any advantage degree students had over diploma students, as if I am a diploma student myself, or is it more only about the problem solving skills? No. See, no one is gonna ask you what degree you are pursuing. What they're gonna ask is your problem statement. That's it, and your problem solving skills. No one cares तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. Okay. So if you guys want this PPT, we'll provide you, and also this recording will be uploaded on the YouTube, so you can watch that. How did you balance the technical depth versus the simplicity in your presentation? See, technical depth can be maintained when your work is coordinated with your team members or equally divided हो. ठीक है. सबका एक जो स्टैक रहता है, टेक स्टैक रहता है, वो उसको असाइन कर दो और उससे बोलो कि जब पूरा काम हो जाए तो टीच दीज थिंग्स टू अस. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू आर गोना मेंटेन द टेक्निकल डेप्थ. सिंप्लिसिटी इज how we maintain the simplicity. See, first of all, एक पेपर और पेन लेके ना जो तुम्हारा आइडिया है वो उस पेपर पेन पे लिखो and then go for PPT. And don't go ज़्यादा हॉश पॉश मत करना, ज़्यादा mess up मत करना. Just try to write as simple as possible. जितना छोटा सेंटेंस होगा, जितना easily readable होगा, उतना अच्छा होगा. और अगर तुम सोच लो कि इंग्लिश मैटर करती है पीपीटी में तो नो, ऐसा नहीं कि तुम वोकैबुलरी के हेवी वर्ड्स डालो. नो, गो फॉर सिंपल वर्ड्स, इजी वर्ड्स. ओके. Yeah. And what are your thoughts on the new hackathon winners and their problem statement? Well, honestly, I didn't go thoroughly on in this 2025 problem statements, but I did go for few. Well, they are fine. Okay. Comparatively, I think 2024 के problem statements were far more better and practical. And this time, even the number of problem statements are less. There are only 70 or 100 something, right? So, yeah. Okay. And also, whenever if you are having the last 5 minutes to convince the judge about our project, then what do you think? Like, how do we have to structure our communication of a project and everything? How we have to keep it for the last 5 minutes?
When you have this 5 last minutes left, cover all the points which you have done. मतलब जो उन्होंने suggestions दिए हैं ना तुम्हें, around 10 suggestions they are gonna give. This is the minimum suggestion list. Okay, mention those point कि like you said sir कि आपने बोला था ये suggestion we added this, उसको show करो कि सर हमने ऐसा ऐसा किया है, also we added this. तुम्हें जो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो तो तुमने इनिशियली एक्सप्लेन कर दिया है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, बट एट दिस पॉइंट जब आखिरी के 5 मिनट बचे हैं तो तुम्हें ये शो करना है कि जो भी आपने हमें सजेशंस दिए हैं वी वर्कड अपॉन इट thoroughly, we did our R&D, and we also took it seriously, and we also went for 2 or 3 USPs. Don't forget to mention USPs and at least make a list of 10 USP and initially show them ki you did work upon 2 or 3, and then at the end disclose everything. Never disclose your tech stack or your working in first round. They should be left for your last round, जब क्योंकि जो last round रहता है ना, they are very curious कि तुमने उन चीजों पे काम किया है कि नहीं जिस पे हमने तुम्हें बोला है, क्या तुम short time period में अपनी problem solving skills apply कर सकते हो कि नहीं. तो this is what they are seeing उन last 5 मिनट में. Okay. Yeah, great. Yes, and we would be providing the links to this recording and PPT as well. And Sambhavi is asking that what problem statement would you like to suggest us for the SIH 2025? I think On for what that, based? I'm so sorry. मुझे उसके लिए 2025 के सारे problem statements read करनी पड़ेगी. But I don't know why. For me, मैं जब भी कोई target करती हूँ problem statement में, तो I go for ISRO, DRDO, Ministry of Defense, because these are the 3 ministries जो बहुत practical problem statement रखते हैं और मैं starting से देखती आ रही हूँ. बाकी जो miscellaneous and all है वो तो बहुत basic है. जैसे we had a person with us, Mahipal, उसने जो अपना बस ट्रैकिंग वाला बताया. These are the problem statements जो already market में हैं, okay? और वो eventually grow कर रहे हैं. तो इसलिए I prefer कि Ministry of Defense, DRDO, ISRO, okay, MP पुलिस, इन सब पे जाओ तो इनके जो problem statement होते हैं वो बहुत practical होते हैं और उन्हें करने में बहुत मजा आता है और learning बहुत होती है. Yeah, that's true. Can we ask you that what's the favorite part for yours? It would not be your first hackathon, right? So till now, how many times you had participated in hackathons? It can be from smaller level to SIH till your whole success journey. How many hackathons it take to be the winner of SIH? I hardly applied into hackathons. In first hackathon, I couldn't make it, not even into the finalist. And second hackathon, we were the winner. So there are only 2 hackathons, that 2 national level hackathons in which I participated. And the third hackathon was this Lake City hackathon where I did participate, and it was a good experience. But comparing the normal hackathon and Smart India hackathon, I prefer the experience and the knowledge you get from Smart India hackathon is way more better than any other hackathon which can provide you. Yeah, great. And so what do you think? What was the best part, or can be said the favorite part? Like the people, the coding, or the pitching? What was it? I think knowledge and pitching. In hackathon you realize you realize your plus points कि where you are good at. क्योंकि क्या होता है ना कि hackathon में you need, even if you are not into web dev, you need to learn a bit of it. तो there you realize कि यार अगर मैं machine learning में, I used to think अगर मेरी machine learning काफी अच्छी है, but अगर मैंने थोड़ा सा भी part web dev का सीख लिया है, तो this is the point of realization जब मुझे realize होता है कि यार I can also do this. तो आई थिंक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि सेल्फ अवेयरनेस मिली और रियलिटी चेक्स मिले. Okay. And our audience is asking that how many times did you go through your PPT and pitching that you thought it's fine? We never prepared for pitching, to be honest. I was the person who used to pitch to the mentors, and I never prepared for pitching. I just went and I did, and they got impressed. Speaking of PPT, I just
I never went through it. I just made it. And I had confidence enough कि I'm doing good job. Also, if you think कि you need to go through it, तो I'll say कि जो तुम्हारी PPT है वो अपने टीम मेंबर्स को दिखा के उनसे अप्रूव कर लो. That will be good. Instead of this कि तुम अपने ही उसमें लगे हो. तो जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी मॉडल बना रहे हो, जैसी भी वर्किंग कर रहे हो, जो भी पिचिंग के लिए अगर तुम प्रेप कर रहे हो और PPT बना रहे हो, तो टेक अप्रूवल्स ऑफ योर टीम मेंबर्स. Confidence is key to success. Yes. Yes, it is. In every field, trust me, confidence is key to success. Yeah. So like on what phase, like after building everything and polishing and everything, so how do we know that like when to stop adding features and just focus on polishing what we have already built? When you feel ki if I'll add more, you're gonna miss. So that's why I'm saying कि जो भी तुम्हारा USP रहे, पहले तो work upon your problem statement, then think of 10 USPs and उसमें से 5 USP you apply. And when you realize कि जो मैंने 5 USPs इस पे apply करे हैं and they're working well, that's the place जब तुम्हें ये लगना चाहिए कि यार मैं एक और चीज ऐड कर लूं, if you think you're capable enough कि तुम एक और ऐड कर सकते हो, तो ही करना. एंड इफ यू डोंट हैव टाइम, डोंट गो फॉर इट, बट एटलीस्ट गो फॉर 4 to 5 USPs, उन्हें अप्लाई करो. और जब तक वो ना चले तब तक तुम दूसरे USP पे मत जाना. मतलब अप्लाई तो मत ही करना. R&D करके रखना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तुम्हें सजेशन में दे सकते हैं. तो तुम एक पॉइंट रख सकते हो कि हाँ हमने ऐसा ऐसा भी सोचा है, इन फ्यूचर वी आर गोना अप्लाई इट. तो या Okay, yeah. And like I'm asking you that if you are like make one dream team, if you want to make personally कि भाई इसमें ये 5 लोग हैं, इसको ये चीज है, ये किसमें स्पेशली होना चाहिए, या इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, या फ्रंट एंड बैक एंड. So how do you make your whole team like the best one? I kept 2 members for machine learning and artificial intelligence, one for web, one for front end, one for back end, and one for database. और and this is for sure कि इन 5 और 6 में से एटलीस्ट एक की तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी. हमारी टीम में से सबकी अच्छी थी, एंड बिकॉज आई वाज द ओनली गर्ल, तो मुझे आगे किया जा रहा था फॉर दिस पर्पस, पिचिंग पर्पस एंड प्रेजेंटिंग पर्पस. तो हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मी ड्रीम टीम इज गोना बी एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर, एक 2 मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड वन हु मैनेजेस द डेटाबेस, because they will ask you a question ki where are you storing your data, which is very important. So yes, this is my dream team. Yeah, that it's needed, right? And from from the perspective of the SIH or any of the hackathons, like what do you think, how did it differentiate of pure software based product or some hardware and software integrated product like projects? We to went for integrated project because that was our USP. See, it totally depends upon your capability on your and on your thinking power कि कितना किस level तक तुम सोच सकते हो. And if you are into hardware edition and if you are capable enough to work equally with software, go for it. You are there to showcase your brain, your problem solving skills and your innovation. You should not stuck कि भाई सॉफ्टवेयर तुम सॉफ्टवेयर पे ही अटके रहो. आई थिंक दैट्स वेयर वी स्टूड आउट एंड दैट वाज द रीजन कि हम जीते, बिकॉज वी इंटीग्रेटेड बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. तो इफ यू हैव कैपेबिलिटी, if you think कि yes you can do it, then go for it. Go for integrated. Yeah, sure. And do you think that hackathons shifting towards problem solving impact more than just raw coding? Yeah, obviously, because what happens, hackathons, when you are preparing for hackathons and when you are, I'll differentiate. When you are preparing for hackathon, you are working on a problem statement, and when you are doing raw coding, you have nowhere to reach. But here you are gonna get result which will make you satisfied and happy enough. एंड उससे क्या होगा, तुम्हारी और अंदर की चाहत बढ़ेगी कि तुम और वर्क करो इस पे. तो उसके लिए यू आर गोना लर्न मोर एंड मोर एंड मोर.
So when you'll prepare for hackathon, when you'll work on problem statements, surely your knowledge is gonna get high, and your coding skills will get better as compared to when you are doing the raw coding. So if I'll ask you in one word, if you define this SIH, then what would it be? Skills. Yeah, skills it is. And if someone like it can be me, but someone who wants to go like beyond hackathon, what should they like keep in mind? What do you recommend? Then in that case, you need to be optimistic. You need to set your bar not only till the SIH. Then you need to be passionate enough to achieve achieve the title of entrepreneur. Yeah. So thank you for answering these questions. And we all know that pitching is more important than anything, right? So thank you for this session. And at last, I would just say that we got to learn a lot about you, and also it's not just about coding. At last, 1 minute. To all our audience, we just had this amazing energy during whole session, and thank you for being engaging for this and giving us your like valuable time. A lot thanks to Arkja, you. And by the way, at last, we'll just like to wrap up this whole session, and thank you Arkja for giving us your time and everything. And if you everyone who is like attending this session, if you find this session helpful, then please stay connected. Make sure to follow and stay connected with CodeNeuraX, because we are having this much more exciting and learning resources lined up for you all. Thank you everyone. Thank you Arkja Gaur a lot. Thanks to you, because it was for me, it was first time participating in SIH. It means a lot to me. I got to learn a lot from you, and I'll also be following everything from zero to right now. I'm learning from someone who has been winner of Hackathon 2024, and it was too great. Thank you so much. Thank you for having me, Prachi. Thank you so much to you people, CodeNeuraX, so that I can share my personal experience and help people out there. So the pleasure is all mine. So at last, if anyone is not having question, we'll just wrap up our session over here. And once again, it was too great interacting with you. And we'll keep everything. We had noted down every single point in our mind. Thank you so much.